this chapter has also got a vital role to play in class 12. If you know trigonometric equations, you can do a lot of things, a lot of calculations will be easier for you when you do calculus in class 12. Okay, right. So first of all, we will come to a question that what are equations? Equations, what is the meaning? Kaha ko kohiba? What are equations? Yes, equation means any algebraic expression or that contains an equality. Any mathematical expression, if it contains an equality, then it is called as an equation. This equality symbol separates two sides. One is called as the left hand side, other is called as the right hand side. Okay. So one thing, that is point number 1, we will write that a mathematical expression containing an equality is called an equation. Okay. Now you see, suppose 3x minus 2 is equal to 0. Is this an equation? Eta gute equation habo ki? How did you know? Equal to achi mane. Simply equal to is present, so it will be an equation. Aao kichi nahi. Okay? Right. Acha. Now you see, in this equation, algebraic expression is there. Three x minus 2 is an algebraic expression. Okay. So this type of equation will be called as an algebraic equation. 3x minus 2 is called an algebraic expression. You see, jadi this equal to eta nahi, at that time 3x minus 2 will be called as algebraic expression. But if this equal to is present, at that time it will be called as an algebraic equation. The difference between expression and equation is this. Okay, presence of an equality. Okay, acha. Now you see, in place of algebraic expression, you can have anything. Let us say, if I say 3 to the power x minus 9 is equal to 0. Okay, so in this case, this expression is called as exponential. It is called as exponential. Why it is called exponential, I will teach you later on. Exponential means variable is present as the power of a constant. Variable is present as the power of a constant. At that time, this type of equation will be called as exponential equation. These are called as exponential equation. Next, I will also teach you logarithm. Logarithm is also very important. Amara chemistry re bhi darkar padibo, physics re bhi darkar padibo, maths re to 100% darkar padibo. So that we will see after this. So jano amara emti achi log x minus 100 is equal to, let us say, 300 suppose, or whatever it is. So equal to is there means equation. Log achi mane logarithmic equation. Okay. Algebraic expression achi mane algebraic equation.
Exponential term is there means exponential equation. Logarithmic term is there means logarithmic equation. Then what should be trigonometric equation? Kono bhabucha kono heitibo? Trigonometric functions jodi thibo equal to sahita along with equality, if we will have trigonometric functions, that type of equations will be called as trigonometric equation. Okay, so next point you write point number 2. Point number 1 samaste lekhi saricha? हाँ, point number 1 आगे लिखी दिया. So point number 2 will be an equation which contains trigonometric functions and identities is called a trigonometric equation. तुमर शुण जहाँ कथा हबार अच्छे से क्लास रो मिडिल रे कहीं कथा हो तुम मैंने मुझे बोर्ड रे कथा होची लिखुची तुम मैंने से कथा हो व्हाट इज द मीनिंग कौन मीनिंग बाहर तार Okay, so an equation which contains trigonometric functions and identities are called kona trigonometric equation. Example of trigonometric equation है परिबा. Suppose sin x is equal to 0. This is a trigonometric equation. How did you know? Equal to अच्छी माने equation, sin अच्छी माने trigonometric equation. Suppose sin x is equal to cos 2x. Equal to अच्छी माने equation, trigonometric functions is present means trigonometric equation. Next, anything tan square x minus 1 is equal to 0. So trigonometric equations can be anything. Okay, the necessary criteria is कौन कौन रहिबा कथा equal to रहिबा कथा along with the equality कौन रहिबा कथा trigonometric functions रहिबा कथा. When you come across anything of this sort, you will say that I am looking into a trigonometric equation. मो कथाटा बुझी पारलो ना समस्ते हला. Now big question is इक्वेशन के साथ क्या करते हो? व्हाट डू यू डू विद एन इक्वेशन? सॉल्व. कौन करो तमे? सॉल्व. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? To get the answer is actually not solution. To find the value of the unknown quantity in the equation. अरे इक्वेशन केमती स्टार्ट हला सृष्टि हला when they started knowing about numbers, real number, natural number, whole number, when they started to know, at that time से कहले मो पाखरे किछिटा चॉकलेट थिला तीनटा मोर भाई को दे देली एबे मो पाखरे पांचटा अछि तो ओरिजिनली मो पाखरे केतेटा चॉकलेट थिला तो सेठी मो x रो मूल्य जते बेले बाहर करबी at that time that will be called as the solution of the equation. x रो मूल्य here what is the unknown quantity? मो पाखरे जते चॉकलेट थिला what is the unknown quantity? x. So my job is to find out the value of the unknown quantity in the equation. Okay, अच्छा.
Now, what should be the value of x? 8. How did you know? Right hand side. So, it became plus 3. Okay. This thing was introduced much later. Ebe situation emti bhabo je you are the only one who has discovered this equation. माने जदि जने जे डिस्कवर करथिले तांकर स्टेट ऑफ माइंड को टिके हमें पढ़िबा पई चेष्टा करिबा से तो से समय रे जानि नथिले ही डिड नॉट नो दैट वी हैव टू टेक 3 टू द राइट हैंड साइड नाउ तमे माने जेतले पढुचो द थिंग्स आर वेरी मच सिंप्लीफाइड जे फास्ट बाहर करथिबे तांकर मुंडर कथा देखो तो से कहबो जे कोन करिबा तो व्हाट डिड ही डू हिट एंड ट्रायल मेथड हां व्हाट डिड ही डू Yes, one by one he went on putting the numbers. जोटारे पटिगला जोटारे मैच करिगला that was the solution. So first he did what? X is equal to 0. X is equal to 0 first he put. So he got left hand side 0 minus 3, right hand side 5. Hela ki hela ni? No, then X is not a solution. 0 is not a solution. Then he went on putting 1, 2, 3, 4, empty kariki jette bale he put 8. At that time he got epote bhi 5 hegala, sepote bhi 5 hegala. So he arrived to a solution that x equals to 8 must be a solution. Why? Because x is equal to 8 satisfies this equation. Now we have to use some new terms. X is equal to 8 satisfies this equation. What is the meaning of satisfies? When we put x is equal to 8, at that time LHS is equal to RHS. That is the meaning of satisfies an equation. If you want to satisfy an equation by some value, if you put that value in the equation, left hand side will be equal to the right hand side. That is the meaning of satisfies an equation. Okay, so here I will say that x is equal to 8 is the solution of this equation because putting x equals to 8 we satisfy this equation. That is the solution. Similarly, गोटे रु अधिक वैल्यू भी हेई परिबो अन्य इक्वेशन रे different equations पाई we will get different values of x. So they माने thought that ए जिनसटा बहुत complicated होची because natural number is an infinite series or infinite set. केते भाभी भाभी का हमें पकेइबा. So we will come to some conclusion. So they started that एटा जदि right hand side को पळे जिवो ताले सेटा प्लस हे जिवो जोटा एपटे मल्टीप्लाई हेतिबो सेटा आरो पटे डिवाइड हे जिवो etc all the rules they framed and after that solution of an equation was very easy. Okay, right. So point number 3 we will write solution of a trigonometric equation. Lekha solution of a trigonometric equation. This is the heading. Solution of a trigonometric equation. Okay. So you write the value of the unknown angle. The value of the unknown angle, because what will be the thing which is unknown in case of trigonometric equation? कौन टा हितबो? Angle. मने करो sin x is equal to 0. तो एटी x जगह रे को एंगल टा पकेले sin x रो वैल्यू टा केते आसीबो? 0. तो मते बेसिकली कहार मूल्य बाहर करिवार अछि? x. x टा कोन एटी? Angle. तो this angle is unknown to me. मु जानि नहीं ए एंगल टा केते हबो. So my job is to find out the value of the angle. जते बेले मु ए एंगल टा बाहर कर देबी मु कहिबी जे I have solved this equation. तो सेति पय हमें लिखिबे कोन the value of the unknown angle which satisfies the equation hello
of the unknown angle which satisfies the equation is called solution of the trigonometric equation. हाँ भितरे तो नहीं अवश्य सेटा सही समय कही भी होता बट आई विल टीच यू डोंट वरी डोमेन एंड रेंज एक्चुअली फंक्शंस रो हुए तो सेठी आमे डिटेल्स रे डोमेन रेंज बाहर करवा दुनिया भर रो डाउट से डोमेन और रेंज बाहर करवा ही हुए तो दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट इट सेपरेटली ताकि ताहारी ऊपर खाली आमे डिस्कस करवा ठीक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करिकरी हला अच्छा हां हां एटा सरी गला परे करे अच्छा sin x अच्छा कौन लिखिलो तुम छौने यस यस दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन एबे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फंक्शंस मानकर गोटे प्रॉब्लम अछि कौन प्रॉब्लम अछि दे आर पीरियोडिक इन नेचर माने किछिटा समय परे दे आर रिपीटिंग देयर वैल्यूज the function which repeats its value after a particular interval of time or after some particular angle, then that function is called as a periodic function. तो trigonometrical जिनस मानकर भी सेटा अछि मने करो तमे sin 60 डिग्री केते आसिला √3/2 sin 420 डिग्री सही √3/2 sin let us say 780 डिग्री सही √3/2 ओके बुझी पारुछ कथाटा एबे मोर प्रॉब्लम टा कोन बुझिबा पई चेष्टा करो सपोज आई हैव ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin x is equal to √3/2 यस एबे मु केमती जानिबी जे मु 60 डिग्री पकेबी तो से तार आंसर आसीबो माने ए जो इक्वेशन ता जे बनिला एटा 60 डिग्री पई बनिला ना 420 डिग्री पई बनिला ना 780 डिग्री पई बनिला देयर इज ए कंफ्यूजन ओके सो मु गुटे कंक्लूजन रे पहुंचली जे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मानकर मोर देन वन सॉल्यूशन हे परिबो काहे कि ड्यू टू देयर पीरियोडिक नेचर जेहेतु से माने तांकर वैल्यू टाकू बार बार रिपीट करूचंती तो तांकर जे सॉल्यूशन हेबो दैट कैन बी मोर देन वन सॉल्यूशन मु कहूची मोर देन वन सॉल्यूशन रो माने कोन हे परिबो मेनी माने n नंबर ऑफ सॉल्यूशन नॉट इनफाइनाइट n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वी विल से ओके तो n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को ताहले हमारा आंसर टा n रो रेस्पेक्ट रे आसी जिवो माने करो n पाए कि n पाए बाय 2 ए टाइप रो करी करी हमारा आंसर टा आसीबो राइट ओके सो जेते बेले व्हेन वी विल टेक ऑल द सॉल्यूशंस जेते बेले सब सॉल्यूशन को हमें नेबा आउ कहा अनुसार लेखिबा n अनुसार लेखिबा at that time those solutions will be called as general solution समस्तंक पाई रेडियन रे अछि हमें कहि कि बेसी एबे रेडियन को यूज करबा डिग्री को कम यूज करबा हला अच्छा देखो हमर मने कर एठी तो किछि भी वैल्यू हेई पारे ना भाई सो जदी हमें आंसर टाकू n रेस्पेक्ट रे रखि दबा माने सिंस वी आर माने वी कैन हैव n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सो व्हाट वी विल डू इज वी विल कीप द आंसर इन टर्म्स ऑफ n so if we keep the answer in terms of n that particular solution will be called as kona general solution mo kotha ta buझी पारछ ना but मने करो you are going to chocolate दुकान को जाउछ तमे कहलो ए डेयरी मिल्क अछि कि से कहला डेयरी मिल्क नाही सेलिब्रेशन अछि सेलिब्रेशन माने कोन ता भितरे सब प्रकार रथिबो मते सेगुडा दरकार नै तो मु कोन करी पर्टिकुलरली आ भितरु एटा मते देई हबो कि तो बहुत जगह रे कोन हबो आमे n टा सॉल्यूशन नै करी कोन आचार बनेबा कि कोन करबा आमे तार किछि दरकार नै हमकु मो कथाटा बुझी परछ तो आमको केवल दरकार जे मोर आंसर टा गुटे एतकी रु एतकी भितरे मते मोर आंसर टा दरकार ये गुटे रेंज भितरे तो जदी मोर रेंज टा 0 to 2 पाए भितरे आसी गला माने करो मो नेक्स्ट क्लास रे पूरा डिटेल्स हमें कवर करबा
जदि मोर आंसर टा 0 टू 2 पाए भितर आसिला माने यस 0 टू 360 डिग्री भितर एट दैट टाइम द सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन कोन कहआ जिवो प्रिंसिपल सॉल्यूशन सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रो छुआ माने दुई प्रकार रो सॉल्यूशन अछि कोन कोन गुटे हला जनरल सॉल्यूशन आ गुटे हला प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्वेश्चन रे इट विल बी क्लियरली मेंशन्ड दैट यू हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन और यू हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन ओके सो जनरल रो किछिटा पार्ट हला प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन माने समस्त को नहीं कि ता भितरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी रहिबो हला बट जनरल रु से पर्टिकुलर पार्ट ताकू जदी मु सेपरेट कर देबी दैट विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन माने करो जदी मते ए इक्वेशन रो जनरल सॉल्यूशन मागी थांता तो आंसर आसी थांता ए सब गुडा को n into 360 व्हाटएवर आई विल टेल यू बट जदी प्रिंसिपल सॉल्यूशन मागीबो तो केते आसीबो 60 डिग्री आसीबो आउ 120 डिग्री आसीबो काहे कि ए दुई जण को पई sin x रो मूल्यटा केते अछि √3/2 आसीबो क्लियर हां किंतु जदी जनरल मागी थांता तो 60 120 420 780 एमती करी करी बहुत गुडा को आंसर आसी थांता हमर क्लियर और नॉट सो वी विल कीप अवर डिस्कशन हियर नेक्स्ट क्लास रे हमें पुनी एटा को आकु बढ़ेबा राइट एटा गुटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस एटा हमर एंट्रेंस परीक्षा रे भी पचारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रो से काहे कि तारो लैंग्वेज रे तुमको से पजल कर देबो जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन किछिटा एन रे थिबो तो आमे तांको सहित केमती डील करिवार अछि आमे टिके जदी जानि गले तारो येटा आमे आराम से तापरे एगुडा को इजीली करि परिबा राइट थैंक यू वेरी मच